मुझे सभा को हमारे दो पूर्व साथियों श्री DN पाटोदिया जी और श्री ब्रजराज सिंह जी कोटा तथा प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री DN पाटोदिया जी राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटोदिया नियम समिति के सदस्य रहे। श्री DN पाटोदिया का निधन 94 वर्ष की आयु में 24 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुआ। श्री ब्रजराज सिंह जी कोटा राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा के सदस्य थे। वे प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री ब्रजराज सिंह जी हाड़ौती सहित राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। शिक्षा, चिकित्सा, कला, पर्यटन, समाज सेवा, संस्कृति में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। श्री ब्रजराज सिंह जी का निधन कोटा में 87 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 2022 को हुआ। पंडित श्री बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रख्यात नर्तक थे। भारतीय कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी कला जगत की बहुत सम्मानित हस्ती थे। पंडित बिरजू महाराज को नृत्य कला में अद्भुत उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण और संगीत नाट्य के अकादमी से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2012 में कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। पंडित बिरजू महाराज का निधन 84 वर्ष की आयु में 17 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों और पंडित बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप MP रिट्स डेसमंड एम्पिलो टूटू और यूरोपीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष महामहिम श्री डेविस ससोली के निधन के बारे में भी सभा को सूचित करना है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू एक वैश्विक नेता थे, जिन्होंने हमेशा मानवाधिकार और समानता के मत पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्व शांति में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2005 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ा। आर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन 90 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2021 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। महामहिम श्री डेविस ससोली यूरोपीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष थे। भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच संसदीय संबंधों को घनिष्ठ बनाने हेतु किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। श्री डेविस ससोली का निधन 11 जनवरी 2022 को इटली में हुआ। हम आर्क बिशप डेसमंड टूटू तथा श्री डेविस ससोली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार तथा उनके अनुयायियों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा
प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, honorable member. Sir, thank you very much, sir. So the minister has replied that he has given some statistics about the performance of the ministries, sir. But some of the constraints which people have been talking about is the lack of support for the MSMEs, where about the reported 10% of MSMEs have closed down. Whether the government has any proposal to strengthen these MSMEs, because some of their concerns are instability in the input prices of raw materials like copper and steel. So whether the government has any proposal to stabilize the cost of these raw materials to ensure that the manufacturing sector and steel, because the reply is आपका प्रश्न समझ लिया है, माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दो, कोई दिक्कत होगी तो मैं करेक्शन The government has taken various steps to boost domestic and foreign investment in India. They include introduction of goods and service tax, reduction in corporate मंत्री जी को पूरा बोलने दे पहले। सीनियर IAS ऑफिसर रहे मंत्री जी, बोलिए मंत्री जी। Sir, various steps have been taken. Consolidation of public sector banks, enactment of 4 labor codes, improving or ease in doing business. FDI policy has been reformed and reduction in compliance burden. Various steps have been taken to increase the manufacturing sector, production in manufacturing sector, sir. Sir, due to COVID, in the COVID period, we have witnessed turmoil due to COVID-19 pandemic, which was the biggest threat to the economic growth. Despite the worst condition, according to IMF and WTO projections, India is likely to grow at the rate of 9.5% in 21 and 22 also. One of the COVID-related challenge into opportunity, series of measures have been taken by the government to improve the economic situation, including announcements of the Atmanirbhar Bharat amounting to rupees 29.87 lakh crores has been earmarked, sir. Sir. ओके, सप्लीमेंट सर। आप चलाएंगे क्या सदन? सदन आप लोग चलाएंगे क्या? सदन की जिम्मेदारी मेरी है, किसको जवाब देना है किसको नहीं देना है। नो प्लीज। I'll just supplement. In addition to what my colleague has just said, and to be more specific to the point that you have raised, I think the MSME sector is one sector on which this government has been very focused all through its tenure. In the worst period of COVID also, we made sure that there was adequate liquidity, credit was provided to the MSMEs as they came out of the distress, and the demand stimulus came in from the government. We've seen most MSME sectors come back into shape to the extent that nearly 4.5 lakh crores worth of government guaranteed bonds, government guaranteed loans have been distributed to have been given to the MSME units across the country. In terms of the price of raw materials like cotton or steel or copper, I think these are internationally determined prices where government interference or government regulation is not advisable. Very often these prices have been very low also. Currently, because of the international situation post-COVID, the prices of almost all commodities, petroleum products are prevailing at a high price, and because of which there is a stress on all sectors. However, international prices of their finished product also has commensurately increased,
and therefore you will find that the export of these products has not faced any detriment. For the 10th month in a row, sir, continuously, from April 21 to January 22, India has posted over $30 billion of exports consistently, merchandise exports for 10 months. It's a record. We have already crossed $334 billion of exports, which is more than the highest ever that India had done earlier in a full 12-month period. We are well on track to achieve $400 billion of export. We are watching the situation, and we shall ensure and monitor that all the MSME industries get support. My esteemed colleague and Minister for Steel had also had a dialogue with the main steel companies to see if they could provide some specific price discounts for the MSME sector and for the exporters for availability of steel. We are working with them, and we hope to be able to come to a negotiated agreement on a special discount for the MSME sector. Sir, he also raised the point about Vietnam and Bangladesh. I'd like to inform the honorable member that Bangladesh continues to be a less developed country. And because of that status, they get duty-free access for several of their products, particularly textiles, in Europe, UK, and many developed economies, because of which they get a price advantage. I think to mitigate that, the important thing is that we look at greater trading arrangements with these countries, for which the government is working to negotiate free trade agreements or comprehensive economic partnerships, so that Indian exporters can also get similar benefits in some of these countries. As you may be aware, we've launched FTA negotiations with UAE, with Australia, with United Kingdom, with European Union, with Canada. We are also in dialogue with the GCC countries, the bloc of 6 countries in the Middle East, who have shown keen interest to have an FTA with India, and we hope to launch that negotiation in the near future. So overall, the country is moving in a direction of export-led growth, and we are supporting export, supporting our MSME sector in a variety of ways. Many member, honorable member. Sir, thank you very much, sir. The other one is the MSMEs are, like the Honorable Minister has mentioned, about 4.5 lakh crores in directly or indirectly they have claimed to have provided, sir. But the problem is, when you're talking about MSMEs, we are talking about industries which have a turnover of 5 crores and industries which have a turnover of about 250 crores. But do we have segregation of these industries as micro, small and medium enterprises where they are segregated, and individual interests of that particular sector need to be addressed? Because if you are going to be treating the micro industry and the medium industry in the same way, because when we're talking about 4.5 lakh crores of aid which is being provided to them directly or indirectly, how much is being given to these medium enterprises, because they are people who are going to be having a lot more requirement to tide over a crisis like this? Thank you, sir. शॉर्ट में प्रश्न, शॉर्ट में उत्तर. सर, मंत्री जी संक्षिप्त में उत्तर. सर, जो ये 4.5 लाख करोड़ के लोन सैंक्शन हुए हैं एमएसएमई को, इसमें लगभग 1.30 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स को फायदा हुआ है. तो मैं समझता हूं कि ये the 4,50,000 crores of loans were given to MSMEs comprising 13 million MSMEs. 1 crore 30 lakh MSMEs were given the benefit of this government guaranteed loans, and therefore I think a very large number of micro and small units have also received this benefit. The definitions of MSME have undergone some revisions, more with the intention to support them to grow bigger, because the earlier definitions are very constrictive and were not encouraging people to grow larger. I think the effort that all of us are trying to do is to encourage our small entrepreneurs also to grow in life, and with that intention, MSME is looked at as a holistic sector. Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir,
the highfalutin propaganda in respect of Make in India has been started fizzling out in view of the fact that 60 lakhs of MSMEs units are reported to have been closed down. Here, you are talking about the growth of MSME, but very sadly, you have evaded the specific questions, that is whether the government is aware that the goals fixed for manufacturing accounted for 25% of GDP, but in reality 7 years on, its share is stagnant at 15%. Do you have any roadmap to achieve this target? Because ये जो मेक इन इंडिया की बात होती है स्वदेशी की, विदेश से पैसा ले जाते हैं और स्वदेशी की बात किया जाते हैं। हमारी ब्रांड वैल्यू पता नहीं, विदेश से जब पैसा आएंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम बेचेंगे विदेशी मार्केट में। अभी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहे हैं, सारे दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रहे हैं। इस हालत में आप ये 25% जीडीपी पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनुअल कितना ग्रोथ होना चाहिए और ये ग्रोथ होने के लिए आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिकॉर्ड परिमाण ये ट्रेड डिफिसिट चल रहे हैं $69 बिलियन। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब की कटौती हो रहे हैं, आप बड़ी चालाकी से 921 और 21 से 22 के 90 से 21 तक ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब तय हुए हैं इसका कोई ब्यौरा नहीं पेश किए हैं। ये सारे मुद्दे को रखकर आपका रिएक्शन क्या है? अच्छे सुझाव हैं, बहुत अच्छे सुझाव। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कुछ ऐसे आंकड़े दिए जिसका कोई प्रमाण मेरे पास तो नहीं है। वो एनएसएसओ पीरियोडिकली सर्वेज निकालते हैं, पर अभी तक कोई पिछले 2 वर्ष के इस प्रकार के आंकड़े तो हमारे समक्ष नहीं आए हैं कि 60 लाख एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गई हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी एक बहुत भीष्म परिस्थिति थी, पूरे विश्व में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और ऐसी परिस्थिति में को देखते हुए ही हमने एमएसएमई के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की आपने विषय बताया, वास्तव में तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको अंतर्ग्रह में देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया जिसके कारण भारत में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये बुरी दुर्दशा हुई। क्या आपने एक जमाने में, क्या आज से 40 साल पहले जब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, उस समय आपने जिस प्रकार से इस हमारे भारत के उद्योग को सपोर्ट ना देने के कारण उसकी जो दुर्दशा करी, उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। हमने हमारी तरफ से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग योजनाएं लाए। अभी पीएलआई की स्कीम के बारे में बड़े विस्तार से बजट में भी बताया गया। 14 सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 76,000 करोड़। इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि भारत में ग्लोबल चैंपियंस बने। माननीय वित्त मंत्री ने अभी बताया कि किस प्रकार से पीएलआई स्कीम्स आने से लगभग 30 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाने के लिए। आपने हाल में ही देखा होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फिगर अभी आया है 11.3%, और इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के द्वारा, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश की एक सक्सेस स्टोरी है। पहले सब मोबाइल विदेश से आते थे बने बनाए, अब भारत में बनने शुरू हुए हैं। अब उसके कंपोनेंट्स के लिए हमने पीएलआई स्कीम लाई है। तो अलग अलग प्रकार से भारत एक विश्व शक्ति बने, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लोग देखें, और आज विश्व में बहुत रुचि है भारत के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। लाओ श्री कृष्णा,
आप सबको अगर मौका दूंगा, अगर शॉर्ट में पूछेंगे शॉर्ट में I'll ask the question in short, sir. राष्ट्रपति भाषण में बोल The लेना। scheme was launched in 2014. It's been 7 years since लंबा the लंबा scheme was भाषण launched. राष्ट्रपति भाषण में बोलना। And one of the main objectives, there's 3 objectives. One of the main objectives was that there will be 12 to 14% growth per annum in manufacturing sector share in the economy. So I want to know from the minister, either by year-wise or quarter-wise, in the last 7 years, how many times have we reached this growth rate? I'll share the information with him. I'll call him to my room and give him the requisite information. मलुक नागर जी। जी साहब, मेक इन इंडिया जब सुनते हैं तो एक शेर का चिन्ह, उसके अंदर गोल गोल मशीन काफी दिखाई देती है। आप तो प्रश्न पूछो। तो सोच नजर आती है माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार की कि हम अपने देश में ही सारी चीजें बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो रंजन साहब पूछ रहे हो तो बाद की स्टेज है। पहली स्टेज है जो इंडस्ट्रीज लगे, जो कारखाने लगे किसी भी चीज को बनाने के लिए। क्या सरकार ने उसका कोई सिंगल विंडो सिस्टम रखा जिससे जल्दी फैक्ट्रियां लग के जल्दी एनवायरमेंट की हो, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो, तमाम अफसरशाही खत्म हो सके और प्रोडक्शन जल्दी आ सके और महामारी कोरोना के बाद जो देश की स्थिति है वो और तेजी से आगे बढ़ सके? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सांसद जी ने। हमने हाल में ही एक लैंड बैंक का पोर्टल बनाया है जिसमें लाखों एकड़ जमीन जो देश भर में है उस सबको GIS के साथ मैप करके प्रस्तुत किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर इंडस्ट्रियल लैंड खरीदना चाहे तो उस पर जाके खरीद सकता है। इसी प्रकार से एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम भी करीब 2-2.5 महीने पहले उसका बीटा लॉन्च किया है। उसमें हम इंडस्ट्री के साथ चाहते हैं कि वो भी उसको यूज करके हमें फीडबैक भी दे और उसको हम और अच्छा बना सकें। लेकिन उसमें लगभग 350-400 अप्रूवल्स केंद्र के और राज्य सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, कुछ 18 राज्य सरकारें भी उसके साथ जुड़ी हैं। उन सबके अप्रूवल्स एक सिंगल विंडो के माध्यम से लोगों को मिले, उसके सुनिश्चित करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो लॉन्च कर दी गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद भी उसको देखें, खोल के देखें और उसमें कुछ अच्छे सुझाव हो। क्वेश्चन नंबर 2 श्री देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर सभा पटेल। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, I would like to inform that a key problem arising from the modernization and digitalization of post offices move is the lack of inadequate infrastructure to support the services introduced. Till today, only 70 to 80% of post offices have access in internet facilities. Furthermore, where there is internet connectivity, it is often slow, which affects the services delivery process. Keeping in the view the above, I would like to know from the Honorable Minister that whether the Union government are aware of this fact, and if so, what action has been taken or proposed to be taken to solve the issue. माननीय अध्यक्ष श्री, आज टेक्नोलॉजी ने हम सबके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन टेक्नोलॉजी के कारण आया है। इसके कारण हम कोई भी अछूता नहीं रह गया। आज टेक्नोलॉजी के कारण जो रिवॉल्यूशन आया है, और हमारा डिपार्टमेंट भी चाहता था कि हमारी सर्विस, जैसे आजकल हर कोई चाहता है कि फिंगर टिप पे हर सर्विस मिले, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी अपने आप को मॉडर्नाइज और कंप्यूटराइज करने का प्रारंभ कर दिया है। हमने देश में बेटर सर्विस मिले, इसके कारण ट्रांसपेरेंसी से फाइनेंशियल सर्विस मिले, मेल सर्विस मिले, एनी टाइम बैंकिंग सेवा मिले, मल्टीपल चैनल्स कस्टमर को उपलब्ध हो, और सोशल सिक्योरिटी के तहत भारत सरकार की हर जो स्कीम है वो डिलीवर हो। उसके कारण हमने कंप्यूटराइज का प्रारंभ किया है, और आज तक हमने करीब 4000
909 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब तक हमने 3,500 से करोड़ रुपीस खर्च करके ये ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ किया है। जैसे माननीय मैडम सांसद जी ने पूछा है, तो उन्हें वहाँ वेस्ट बंगाल में केवल 89 पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सर्विस बाकी रह गई है। बाकी हमने इस देश से करीब 25,109 डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस को इंक्लूडिंग 1,770 वेस्ट बंगाल पोस्ट 770 आपने जवाब देना माननीय सदस्य। ये तो पढ़ लिया मैंने जवाब में पूरा, तुमने पढ़ लिया। आप सभी माननीय सदस्यों से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे तो हर सत्र में आग्रह करता हूं, लेकिन बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, पुनः आग्रह करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्य संक्षिप्त में सवाल पूछे और माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि वह संक्षिप्त में जवाब दें, उनसे ज्यादा आग्रह है। Honorable Speaker, sir, I would like to draw the kind attention of the Honorable Minister toward the reply of the Rajya Sabha answered question number 1520 dated 10th December 2021, in which the Honorable Minister had given a statement that all the departmental post offices in the country, including West Bengal, are computerized in the country as on 31st March 2021. I would like to know from the Honorable Minister that whether it is a fact that there are about 19 departmental post offices in West Bengal are not yet computerized and migrated to CBS. If so, the details thereof and the reasons therefore and the steps taken proposed to be taken in this regard. एक मिनट, एक और संशोधन कर दूं। ऐसे तो आप सब वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं, कभी भी दूसरे सदन के विषय और उनके उत्तर के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं की जाती। क्यों वरिष्ठ सदस्य स्वागत राय जी ठीक है नहीं है? स्वागत राय जी ये ठीक है ना, दूसरे सदन की सदन में चर्चा नहीं की जाती प्रश्न के उत्तर की? अगर दूसरे सदन में मंत्री कुछ कहे वो रेफर किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। मंत्री कुछ कहे तो हाँ रेफर किया जा सकता है। ओके। अध्यक्ष श्री, जैसे माननीय मंत्री जी ने पूछा है, माननीय सांसद जी ने रिमेनिंग 19 पोस्ट ऑफिस जो बाकी है वो हम फेज मैनर में कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। श्री सीए एन अन्नादुरई जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to know from Honorable Minister of Communication that the total number of computers and modernized post offices in Tamil Nadu in general and Tirunelveli in particular, and by when all post offices would be modernized in the state. Thank you, sir. अध्यक्ष श्री, मैं शीघ्र ही उनको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। श्री एस, क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रश्न जो था माननीय सदस्य का, मूल प्रश्न पश्चिम बंगाल का था, वो पूछ रहे हैं तमिलनाडु का, इसलिए मैंने उनको उत्तर को संतुष्ट माना। क्वेश्चन नंबर 3, श्री एम मुनिस्वामी। क्वेश्चन नंबर 3 माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मेरा कोलार के बारे में, गोल्ड माइन के बारे में क्वेश्चन पूछने का अवकाश मिला। मेरा कोलार गोल्ड माइन पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। ये पूरा दुनिया को बहुत साल गोल्ड देता था, अब तो 20 साल से वो बंद है। मैं बहुत बार इसका बारे में क्वेश्चन पूछा हूँ। मेरा गोल्ड माइन शुरू करने का हमारा सरकार क्या निर्णय लिया है?
और निर्णय लिए तो उसका बारे में पूर्ण विवरण देना। उसके बाद उधर क्या गोल्ड माइन था अध्यक्ष जी, उधर का गोल्ड का हमारा 70 साल ये देश को कौन चलाया, उन्होंने गोल्ड चोरी कर लेके चला गया। बाद में उधर का सैंपल पीस था गोल्ड का 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी का, उसका भी मेरे से पहले कौन सांसद था उन्हें भी चोरी कर लेके चला गया। नो माननीय सदस्य, प्लीज नो। आप उधर कार्रवाई से निकाल दें, निकाल दिया, कार्रवाई से निकाल दिया। गोल्ड माननीय नो। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। गोल्ड माइन अब शुरू करने के लिए सरकार क्या निर्णय लिया है? निकाल दिया। उसके साथ में उधर क्या ये आप प्रश्न पूछे ना माननीय सदस्य। उधर म्यूजियम बनाने के लिए क्या निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन आप। बाद में उधर रेलवे प्रोजेक्ट बहुत सारे कुप्पम और मारी कुप्पम का बीच में क्या रेलवे लाइन आधा कड़ा है, उसका बारे में क्या निर्णय लिया है? उसका बारे में मंत्री जी मुझे आंसर देना, इसलिए मनवी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि कोलार स्वर्ण भंडार जो था 1973 से 2001 तक इस देश को स्वर्ण देता था, लेकिन 2001 के बाद ये खदान अनवायबल हो गया। उसकी लागत, उसमें मिलने वाला जो स्वर्ण था उसमें काफ़ी अंतर हुआ, इसलिए इसको बंद करने का निर्णय हो गया अध्यक्ष महाराज। इसलिए ये बंद करने का निर्णय होने के बाद उसके जो एम्प्लॉइज थे वो कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में चले जाने के बाद कोर्ट ने ये निर्णय, सरकार का निर्णय सही ठहराया और एम्प्लॉइज को उसमें प्रायोरिटी देने की बात कही, और इसलिए इसके लिए ये कमेटी फॉर्म की गई। उस कमेटी ने जो सिफारिश की, उस सिफारिश की तहत सरकार काम कर रही है। उन्होंने पूछा है संग्रहालय बनाना है नहीं बनाना है, ये जवाब दे दो आप। संग्रहालय बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरा जो पूछा कि कर्नाटक के सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे, रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार बैठ के इस पे पॉजिटिव विचार कर सकती है। ठीक है मंत्री जी, उधर 2 ब्लॉक है, उसको हम कर्नाटक को हैंड वर्क करते हैं। वो टोटल 12,600 एकड़ है करके मेरे बहुत अधिकारीगण का है, वो क्या सच्ची है क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने फिलहाल 2015 में MMDR कानून बनाया है। कोई भी माइन ऐसे हैंडओवर नहीं कर सकते, उसको ऑक्शन में आना पड़ता है। श्री सुरेश धानोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय प्रहलाद जी जोशी जी का अभिनंदन करता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रपुर जिले में जो कर्नाटक एम्प्टा माइन जो 6 साल से बंद थी वो चालू हो गई और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। हो गया मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यवतमाल जिले के मार्की मांगली 3 तालुका झरी जामनी में कंपनी BS इस्पात और टापवत ऊर्जा एंड मेटल लिमिटेड कोल ब्लॉक आवंटित है। ये दोनों कंपनियां आवंटित मात्रा से भी ज़्यादा खनन कर रही है, जो कि गैरकानूनी है और खनन के हिसाब से सरकार को रॉयल्टी भी नहीं दे रही है। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आप इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? यदि हाँ तो क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, इसकी शिकायत तो कोई हमारे पास नहीं आई है, लेकिन मैं माननीय संसद जी से मिलूंगा और चर्चा करके फिर कार्रवाई करेंगे। श्री मनीष तिवारी जी। क्वेश्चन नंबर 4 कौशलेंद्र कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि जिस तरह से SEZ
2005 के बाद कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, तो क्या माननीय मंत्री जी फिर से बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई प्रस्ताव लेंगे क्या, जिससे बिहार की प्रगति हो? नहीं, कोई नियम नहीं है सर। माननीय सदस्य की चिंता जायज है। जितने भी SEZ हमने सेटअप किए हैं 2005 के एक्ट के उपरांत, उसमें लगभग देश के सभी राज्य हैं, लगभग 24 राज्य हैं, किंतु बिहार उस सूची में नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि SEZ एक्ट 2005 के आने के बाद जो SEZ सेटअप करने के लिए प्रस्ताव आते हैं वो राज्य सरकार की ओर से आते हैं, और बिहार राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से हमें अभी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपके राज्य सरकार की ओर से हमें SEZ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो उस पर विचार करेगा और हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि बिहार पहले से पिछड़ा राज्य है और बिहार में जो पिछड़ापन है आज भी लगातार विशेष राज्य के दर्जा का मांग होते रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तर्ज पर जम्मू कश्मीर को आपने, उत्तराखंड को, पूर्वोत्तर राज्यों को आपने विशेष रूप से विकसित करने का कोई फैसला लिया है क्या, उसी के तर्ज पर बिहार को भी विकसित किया जाए? महोदय, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो विषय है वो इस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, अतः इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, one of the fundamental objectives of special economic zones was to boost exports. As the Honorable Commerce Minister was pointing out, India has done rather well over the past 10 months insofar as the export performance is concerned. But there are two looming challenges. The first is that as advanced economies, wind down their fiscal stimulus, the purchasing power in these advanced economies is going to be impacted. Number two, there is a problem because of COVID-19, which is that there has been a structural change in consumption patterns all across the world. The Honorable Minister was referring to, certain FTAs which are under negotiation. Now, some of these FTAs have been under negotiation for a very long time. The Indo-EU FTA has been under negotiation since 2008. India walked out of SEPA for reasons which are best known to the government. My limited question to the Honorable Commerce Minister is, given the fact that over the next 2 or 3 years, these are two challenges which are looming on the horizon. Number one, a contraction in purchasing power as a consequence of withdrawal of the fiscal stimulus. Number two, the change in consumption patterns as a consequence of COVID-19. Does the government have any strategy to deal with these two challenges? Mr. Speaker, sir, I must appreciate the Honourable MP for having raised a very futuristic scenario about which the whole world is today grappling and concerned. However, there is a silver lining to this. The geopolitical shift that we have seen in the post-COVID world, also the geopolitical situation that's emerging vis-a-vis certain countries which were erstwhile very large exporters or producers of manufactured goods, lends itself to a big opportunity for India to capture newer markets, newer products going from India. And it is with that intention that, if you will observe, the Honorable Finance Minister yesterday alluded to this when she spoke about changing global supply chains, patterns of procurement. Today in the morning, the Honorable Prime Minister also spoke about the post-COVID world being entirely different from what we have known the world to be in the past. And it is a time for India to grab these opportunities. Therefore, the PLI schemes could not have come at a more opportune moment. What we are trying to do in that is create global champions, get economies of scale into India, and make India the preferred supplier as an alternate to certain geographies with which many countries do not wish to transact business. Incidentally, India did not walk out of the CEPA discussions with EU. They were started in 2008, but around 12 or 13,
they gave up on the discussions because they found that they were not getting anywhere, and the discussions were started getting stalled around 12-13, and in a year or two, the discussions almost came to an end. It is because of the relentless pursuit with the European Union in terms of diplomatic engagement that the government was able to once again relaunch the negotiations with EU as recently as July 2021, when in the Portugal presidency, they accepted to do an FTA with India. Incidentally, post-Brexit, the discussions with UK is completely new. In terms of RCEP, if at all you were trying to recall RCEP, India walking out of RCEP, I think every member in this House and everybody in the whole country, every industry association, every export organization, every MSME organization, everybody with one voice has thanked the Honorable Prime Minister for not subjecting Indian industry to unfair trade, unfair competition from a geography where it does not have transparent economic policies. Maybe some parties or some leaders have a great affinity for some country. But the reality is, we already had an FTA with Korea, Japan, and the ASEAN bloc of 10 countries. With Australia, we are now negotiating and we are at an advanced stage. New Zealand, we have very little interest. So effectively, RCEP would have landed up becoming an FTA with one country. And certainly, the practices that that country follows in trade do not lend themselves to opening India's borders to lower tariff trade or giving them greater market access. And I think that was one decision which was very well considered. In fact, I'm amazed why we got into the RCEP negotiations at all in 2012 in the first place. But I'm grateful to the Prime Minister on behalf of the entire Indian industry, farmers, our dairy sector, our MSME, that we did not pursue the RCEP story any further. Sir, may I, with your permission, Mr. Speaker, sir, may I, for a second, since the Minister, Mr. Speaker, sir, may I, with your permission. Question number 5, Srinivas Patil. Question number 5, Srinivas Patil. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। इस बारे में जो सातारा का सवाल उन्होंने पूछा है, आपने जो जवाब दिया है उसमें सी पेशेंट जो है सी, उसका जवाब आपने दिया नहीं है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना लोगों को मिला। अब इसमें मैं मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो रेल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन को आप लोग रिहेबिलिट करते हैं। आपको एक नई नीति अपनानी पड़ेगी। क्या सरकार ये नीति अपनाएगी जो रेल के जमीन पर, भूखंड पर जो झुग्गी झोपड़ी आप रहती है, हाल ही में नोटिस दीजिए। कल मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली है, लेकिन एक नीति अपनानी पड़ेगी। जब भी ये प्रोजेक्ट आते हैं तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए आप कॉम्पेंसेशन देते हो, लेकिन जो मकान है, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, और वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो हम आपसे विनती करते, क्या आप प्रधानमंत्री जी जो सपना दे रहे अपने देश के गरीबों को, पक्के घरों का वादा कर रहे, क्या हम उनमें से ऐसे लोगों को पक्के घर देने के लिए कुछ कोशिश करेंगे या नीति अपनाएंगे? ये नीति अगर अपनाएंगे तो ये समस्या पूरे देश के लिए आपकी हल हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार को इसके बारे में उत्तर देने की विनती करता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय सांसद जी ने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव पे कल माननीय सांसद जी और इनके साथ और 8 अन्य गणमान्य सांसद मेरे से मिले थे। बहुत अच्छा सुझाव है। इस सुझाव के और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन पे सारा विचार करके नीति बनाई जाएगी। श्री M.K. Raghavan. Railway has conducted a survey for new line of Farooq to Angadipuram in 2009, and the proposal has been submitted before the Railway Board for necessary action. So I would like to know from the Honourable Minister, what is the status of the proposal which is submitted before the Railway Board? प्रश्न पुणे सतारा लाइन का है सर, और ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे टोटली अनरिलेटेड है।
ज्वेलाराम जी। सर, माननीय मंत्री से मैंने मेरा समस्या बताया है, ये डिस्प्लेस का बात है। जो डिस्प्लेस रेलवे जमीन में कभी भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है। रेलवे का जमीन था, हमारा जमीन तो हमारा था, रेलवे ने एक्वायर किया, 30 साल उसको यूज नहीं किया है। अभी अगर डिस्प्लेस करने के लिए कोशिश कर रहा है तो अभी का रेट दिया जाए और नीति के हिसाब से उनको नौकरी दिया जाए। ये पॉलिसी माननीय मंत्री अपना सकते हैं क्या? ये मेरा रिक्वेस्ट है। मान्यवर सांसद जी, जिस विषय में कह रहे हो उस विषय पे सब कलेक्टर के हिसाब से मैंने टैकल किया हुआ है। विषय को मैं बहुत डिटेल से समझता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके विषय में अभी कोई जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई नीति बन पाई तो जरूर इस पे काम करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 श्री जगदम्बा पाल जी। सर, मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है, इसके साथ मैं क्लब किया था सर। अच्छा, हाँ सर। आगे देखते हैं। क्लब करने का अधिकार मेरा, आपका नहीं है सर। आपने नहीं सर, आपसे नहीं, ये अधिकार मेरा है। आपने कहा था क्लब किया था, क्लब तो मैं करूंगा ना क्लब। हाँ सर। सर आपको इजाजत किसने दी? मैंने जगदम्बा पाल जी को दी है सर। मेरा क्वेश्चन क्लब किया, मेरा क्वेश्चन था सर। नहीं, आपने क्लब कर लिया खुद ने अपने आप ही। जगदम्बा पाल जी रिक्वेस्ट किया था सर। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ना जी? प्रश्न नंबर 6 उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। Honorable Speaker, I think so. Minister has already explained present size of the data center market, and he has given in detail, and he has accepted that the market are projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 25.9% from 2019 to 24 to reach 12,150.8 crore by the end of 24. And in last 1 year, it will go. So I think so. The market was worth approximately 4,501.2 crore in revenue in 2020, representing growth of 18.4% over 2009. So I think the need not to explain the importance of this data center. I would like to ask one question about the artificial intelligence and G5, expected to generate a huge demand for the data centers. Therefore, what is the roadmap of the ministry to deal the escalation in the demand of data centers, and also whether the government has proposed any plan to develop the state of Uttar Pradesh in terms of the data centers and capacities, if so, the details thereof, please. सर, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया है सर, मैं बहुत ही अति प्रसन्नता के साथ कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश ने जो डेटा सेंटर की पॉलिसी लाए उसके कारण पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश, जहां पर बहुत नगण्य सा डेटा सेंटर था, आज देश के टॉप 4 स्टेट्स में इसकी गिनती होती है। उत्तर प्रदेश की पॉलिसी में ROW ले करना बहुत आसान है, बिल्डिंग के जो बायलॉज है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आज जिस तेजी से ग्रो कर रहा है और जिस तरह से देश में डेटा सेंटर अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पॉलिसी में भी काफी अच्छे बदलाव आ रहे हैं सर, इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ये कहा है कि हमने अभी तक कोई पावर यूसेज इफेक्टिवनेस के लिए डाटा सेंटर्स के लिए कोई स्टडी नहीं कराई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी फ्यूचर प्लान टू कंडक्ट स्टडी फॉर पावर यूसेज effectiveness and also to develop green data centers to save energy in the country? बिल्कुल, इस मामले में इंडस्ट्री के साथ सहयोग चल रहा है अध्यक्ष जी, और पावर यूजर इफेक्टिवनेस भारत में करीब 1.6 से 1.7 है। ये इंडस्ट्री प्योरली एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट मेरे हिसाब से मिनिमम इंटरफेरेंस करे तो शायद इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। हमारी ये थॉट प्रोसेस है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सुझाव होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई बीच में बैरियर होता है, वो बैरियर हम दूर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छा से इवॉल्व कर रही है सर। माननीय शशि थरूर जी। Very much, Honourable Speaker, sir. Sir, this question of green data centers, you know that according to the International Energy Agency, data centers consume approximately
200 terawatt hours of electricity. Nearly 1% of global electricity demand is just from data centers. And that contributes, of course, to CO2 emissions as well. Now, when you speak about green data centers, or the Honorable Minister does, he has not specified what are the criteria. How do you measure what is a green data center, sir? How does the government plan to retrofit or modify the existing non-green data centers that are running on obsolete technology and is a major driver of excess energy consumption? We are hearing about greenwashing, so people are just pretending that something is green when it is in fact actually contributing to pollution and environmental danger. So I would like to ask the Honourable Minister what steps are being taken to ensure that we actually can minimize power consumption and the deleterious impact on the environment of data centers while promoting a concept of greenness which he has yet to define. If you could please define it, sir. Thank you, Mr. Speaker. Honourable member has asked a very relevant question, sir. The industry itself is coming up with the standards for what should be defined as a green data center. There are two criteria in this, sir. First is how much of renewable energy is being used in the running of that data center. Second is what is the energy efficiency. So these are the two factors basis which a data center can be defined whether it is a green or a non-green. Today the global best standard, as we understand from the industry, is 1.3 as the PUE. We are already at 1.6 in the country as an average. So I think, and ultimately, sir, if solar energy is today coming to be around 3.5 rupees per kWh, everybody wants to use that only because it makes economic sense, it is green, it is better for the climate, sir. So we are moving in that direction. Sri Ritesh Pandey. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के डेटा सेंटर पॉलिसी के बारे में अभी आपने यहाँ पे कहा और उससे उत्पन्न हो रही नौकरियों के बारे में कहा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो डेटा सेंटर की पॉलिसीज आई है इससे कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई और कितने बेरोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पे नौकरियां मिलने का काम हुआ है। इसका कोई डेटा है, उसको प्रदान करने का काम? सर, इसका एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 श्री संजय जादव। माननीय मंत्री जी पहले सदस्य को तो बोलने थे। श्री संजय जादव, श्री ओम राजे निवालकर। क्वेश्चन नंबर 7। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया था। माननीय सर, मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है सर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो सेंटर चलाए जाते हैं तो उसमें सर जो एफसीआई के माध्यम से जो सेंटर चलाए जाते हैं उसमें जो वहाँ के जो ग्रेडर रहते हैं तो उसकी बहुत बारीकी से जांच होती है सर। मुझे लगता है कि जो किसान उनका जो माल है वो वहाँ पे लाने के बाद भी बहुत सारा रिजेक्ट होता है, लेकिन उसकी तुलना में नाफेड के माध्यम से जो खरीदी चलती है वो ठीक चलती है सर। तो जिस प्रकार से नाफेड के माध्यम से खरीदी चलती है वही लिबरल पॉलिसी के माध्यम से एफसीआई के लोग भी परचेस करेंगे क्या सर? जहाँ तक माननीय सांसद जी ने प्रश्न किया है महाराष्ट्र के बारे में, और आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ डिसेंट्रलाइज्ड जो है विकेंद्रीकरण है वो वहाँ प्रोक्योरमेंट पूरे राज्य सरकार ही करती है और राज्य सरकार दो एजेंसी के माध्यम से, एक तो महाराष्ट्र ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मार्कफेड, ये महाराष्ट्र के माध्यम से परचेज होती है। सर मेरा सवाल ये था कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग भी जो किसान भाई रहते हैं वो भी कहते हैं कि बाबा आप जो हमारा जो जिला है वो एफसीआई के बजाय नाफेड के माध्यम से लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो बहुत बारीकी से जांच करने के बाद जो किसान का बहुत सारा माल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो मेरा ये कहना है कि एफसीआई के लोग भी जैसे नाफेड के लोग थोड़ी लिबरलता रखते हैं उसी प्रकार से करेंगे क्या? बस इतना ही क्वेश्चन है सर। कहा कि एफसीआई महाराष्ट्र में परचेज नहीं करती है, वो महाराष्ट्र में विकेंद्रीकरण का व्यवस्था है, राज्य सरकार करती है। माननीय सदस्य, राज्य सरकार इसके लिए एजेंसी बना दी एफसीआई ने। राज्य सरकार जिस भी एजेंसी को चाहे वह दे सकती है, चाहे नेपेड को भी दे सकती है, राजपेड को दे। आप राज्य सरकार से चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 13
हाई स्पीड राइट। नो क्वेश्चन आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 8 डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। डॉक्टर सुजय विके पाटिल। माननीय अध्यक्ष महाराज, प्रश्न उत्तर सभा पटल पर रखा। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, a similar question has been put today in question number 13, that is regarding Silver Line project in the state of Kerala. Pardon? So I would like to know from the Honorable Minister. So the Minister has already given the report in question number 8 that 7 projects have already been given for taking the detailed project report, 7 reports, that is Delhi Varanasi to Delhi Amritsar. In my state of Kerala, there is a project by name Silver Line project of K-Rail, for which no sanction has been provided so far by the Ministry of Railways. But it is quite unfortunate to note that land acquisition, forcible land acquisition is being going on, though there is no permission from the railway, there is no environment report impact assessment, there is no social impact assessment, nothing is there. Even the technical feasibility is also in doubt. In such a situation, how the land can be taken by forcibly? That has to be cleared by the Ministry of Railway, because the Ministry of Railway has categorically stated that no permission has been given for the Silver Line project. So I would like to know from the Honorable Minister, the Vande Bharat trains, 400 Vande Bharat trains will be provided as per the budget proposal which was brought yesterday in the Parliament. So I would like to know from the Honorable Minister whether such type of trains, high-speed trains using the existing broad gauge line, will be implemented or will be formulated in the state of Kerala, instead of having a Silver Line project in which thousands and thousands of people are to be evicted, for which I am seeking a clear answer from the Honorable Minister. Thank you very much, sir. अध्यक्ष महोदय, आपका मैंने जवाब दिया था, आप थे नहीं इस समय, पानी पीने गए थे, तो पानी पियो। तो पानी पिला दिया जी। माननीय प्रेमचंद जी ने जो प्रश्न पूछा है, मुझे ऐसा लगता है केरल स्टेट का ये प्रश्न है, और जो मूल प्रश्न है वो अलग है। अगर प्रेमचंद जी से इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अलग से प्रश्न। संजय विके पाटिल। आप माननीय सदस्य को अपने चेंबर में बुलाकर जानकारी दे देना। आप सभी एक मिनट प्लीज। आप डिटेक्ट कर सकते हो किसी को? क्या आपको ये जवाब दे जाए? नो। आपको मैंने व्यवस्था दे दी है कि माननीय मंत्री जी आप सभी केरल वालों के साथ बैठकर चर्चा है। संजय विके पाटिल। Thank you, Speaker, sir, for allowing me this supplementary question. Since the railways will be importing high-speed trains, Shinkansen from Japan for initial stages, I would want to know from the minister through you, sir, are there any plans to manufacture and export the bullet train coaches through Make in India, which could bring down the cost of operating the Shinkansen trains in the country, and whether the government has signed any agreement for transfer of technology for the same? Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय ने दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलोर, वाराणसी हावड़ा और दिल्ली अमृतसर, ये निम्नलिखित हाई स्पीड रेल गलियारों का विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। लेकिन आप अभी तक एक डीपीआर आया है, बाकी डीपीआर आना बाकी है। इसको किसी को भी अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई, और स्वीकृति देने के बाद इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर प्रोफेसर सौगत राय, टी.एन. प्रतापन, एडवोकेट अदुर प्रकाश, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, अधीर रंजन चौधरी जी, के सुरेश,
आपको इजाजत नहीं दी भी एन.के. प्रेमचंद्र जी का स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के कारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री को 7वीं लोकसभा के 8वें सत्र के दौरान कार्यसूची में सभा पटल पर रखे जाने वाले शीर्ष के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए पत्रों को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आइटम नंबर 3 से 15 श्री मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other colleagues, Sri Prahlad Joshi ji, Sri Ashwini Vaishnav ji, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Fagan Singh Kuliste ji, Sri Ashwini Kumar Chaube ji, Sri Arjun Rang Meghwal ji, Sri Danve Rao Sahib Dada Rao ji, Sadhvi Niranjan Jyoti ji, Srimati Anupriya Singh Patel ji, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Srimati Darshana Vikram Jardosh ji, Sri Som Prakash ji, and Sri Devu Singh Chauhan ji. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial number 3 to 15 in today's revised list of business. सचिव आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100.
Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crores during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelachal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100.
This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology
for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture
and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include, inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability
and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill, or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as a harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development.
Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction-related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. For existing central or state schemes, while the central ministries may also post their candidates' projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,005 in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even